I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. Today I will deliver lecture on elastic strings, Hooke's laws. We have done in the previous lecture Hooke's laws, Young's modulus of elasticity, and the theorem that the work done against the tension in stretching a light elastic string is equal to the product of its extension and the mean of the initial and final tensions. Mean of the is the product of its extension and mean of the initial and final tensions. Horizontal elastic string, an elastic string of natural length L and modulus of elasticity lambda has one end fixed at a point O on a smooth horizontal table. A particle of mass m is attached to the other end A pulled to the position B where AB equal to A and then let go. Discuss the motion. We have this also done in the earlier lecture, horizontal elastic string. Okay, now we will do in this the present lecture vertical elastic string. A particle of mass m hangs in equilibrium from a fixed point O by an elastic string or spring of natural length L and modulus of elasticity lambda. The extension produced in the string being E. The mass is then further pulled from a further farther length A less than E and then let go. Discuss the motion. We are again repeating this vertical. A particle of mass m hangs in equilibrium from a fixed point O by an elastic string or spring of natural length L and modulus of elasticity lambda. The extension produced in the string being E है extension. The mass is then further pulled from a further length A less than E and then let go. Discuss the motion. अब इसमें here OA क्या है? L natural length है. With the natural length of the string. This OA L है natural length of the string and AB equal to E with the extended length. मैंने मास m हैंग्स इन इक्विलिब्रियम, मास m हैंग कर रहा है इक्विलिब्रियम में. मैंने A mass m hangs in equilibrium. B is the position of static equilibrium. B क्या है? पोजीशन है static
इक्विलिब्रियम की। इफ T नॉट इज द एक्सटेंशन एट B, B पे एक्सटेंशन T नॉट है, देन mg बेट इक्वल टू T नॉट और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इक्वल लैम्डा E डिवाइड बटे L एक्सटेंशन बाई नेचुरल लेंथ हुक्स लॉ, और लैम्डा इक्वल टू mg/L बाई E। लैम्डा क्या है? mg/L बटे E 1। नाउ लेट मास m बी फर्दर पुल्ड टू ए पॉइंट C। कहता है नाउ लेट मास m बी फर्दर पुल्ड टू ए पॉइंट C। C पॉइंट तक पुल करते हैं, वेयर BC इक्वल टू A। C पॉइंट तक पुल किया, C तक, B से C। Now let mass m be further pulled to a point C where BC equal to A less than E and then released, और फिर रिलीज कर दिया। Let at any instant the particle is at P। Let at any instant the particle is at P। P पॉइंट पे है, where BP इक्वल टू x। BP क्या है? x के बराबर, where BP इक्वल टू x। लेट T विद द टेंशन एट P। T क्या है? टेंशन है P के ऊपर। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन एट P इज m d2x बाई dt2 इक्वल टू mg माइनस T इक्वल टू mg माइनस लैम्डा टाइम AP बटे L हुक्स लॉ। mg माइनस लैम्डा इंटू E प्लस x बटे L। mg माइनस लैम्डा E प्लस x बटे L। AP क्या है? दिस A से P, E प्लस x। ए बी तो E है और x ये है, ठीक। E प्लस एक्स, mg माइनस T इक्वल टू mg माइनस लैम्डा इंटू AP बटे L हुक्स लॉ। mg माइनस लैम्डा E प्लस x बटे L इक्वल टू mg माइनस mg/L बटे E प्लस x बटे L इक्वल m माइनस mg बटे E इंटू x फ्रॉम 1 इज इक्वल टू माइनस mg बटे E इंटू x फ्रॉम 1। m से m कैंसिल कर दो और देयरफॉर d2x बाई dt2 इक्वल टू माइनस g बटे E इंटू x is equal to minus mu x, where mu equal to g बटे E, which shows that the motion is simple harmonic with center of oscillation at B। center of oscillation B पे है, position of equilibrium since BC equal to A less than E। The mass does not go along above A से ऊपर नहीं जाएगा, where A is the amplitude। A is the amplitude। Period of oscillation is equal to 2 pi बटे under root mu equal to 2 pi under root E by G 2 पाई अंडर रूट ml बटे लैम्डा, क्योंकि E बराबर है mg/L बटे लैम्डा फ्रॉम 1। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू A अंडर रूट म्यू
A under root G bute E power A under root lambda bute ml A under root lambda bute ml give 2 pi say 2 pi maximum velocity A under root mu. A light elastic string of natural length L B part has one end of it fixed at O and to other end is attached by a mass M which is in the state of equilibrium. Wood stretch string by length E. The mass is pulled down a distance A greater than E below the equilibrium position to discuss the motion of the mass. As in the case A above, the equation of motion is d2x by dt2 equal to minus g bute E into x. Since A greater than E, the mass after being